Today's topic is going to be interesting because in this today's live discussion, we are going to learn exactly how to use passive voice in our practical English communication. Passive voice. It's very, very crucial for everyone to know and to understand. एक काम करते हैं हिंदी में और बंगाली में एनालिसिस करते हैं ताकि सबको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि what is passive voice and how we should use passive voice in our practical English. Okay, तो not only for speaking, अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है, if that person is using passive voice, so we have to know passive voice, especially for understanding also, not for speaking. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब इंग्लिश सुनते हैं या फिर बोलते हैं, okay, I'm accepting one by one. Yes, best evening. Best evening, sir. Yes, best evening. And today's topic will be a little bit different. Okay, it will be beneficial for everyone. सबके लिए है ये. जो देख रहा है ये वीडियो सबके लिए है क्योंकि अच्छा, in this video we are going to discuss about the importance of passive voice. दुनिया भर का जो हमेशा होता है ना कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पैसिव वॉइस सिखाया जाता है ना. So now you're not going to score marks in exam. You're going to use English in a practical life, right? To make an impression by your speech or presentation. इसीलिए हम लोग आज देखेंगे कि पैसिव वॉइस को प्रैक्टिकली एक्चुअली हम लोग कैसे यूज करते हैं. एंड व्हाई पैसिव वॉइस इज सो मच इम्पोर्टेंट. okay. ठीक है. So I'm just waiting for others to join this discussion so that we can have more fun, more understanding. Yes. Right. And before they join, let me tell you one thing. Passive voice. So before you learn anything, हम लोग जब कुछ सीखते हैं ना, before asking the question, don't learn anything. The question is, why should we learn this? है ना? Why should we learn this? जैसे कि in my opinion, मैं क्या समझता हूँ, जैसे we learn, all the students learn a plus b whole square. This is the formula, right? A formula specially to solve or to sort out the problems in mathematics. है ना. मैथ में क्या होता है ना कि a plus b whole square का फॉर्मूला जो है सबको पढ़ना पड़ता है पता ही right. और ज़्यादा से 95% students already know the formula of a plus b whole square. But I don't know how many. मुझे ये पता नहीं है कि a plus b whole square, how it is used, or by this formula what do we count. हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या काउंट करते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके. आई फाइंड नो वन टू से दैट. बट इसका आंसर भी मेरे पास है. तुम्हें पता है कि a plus b whole square, if it is not if it is not useful in practical life, so why do the students learn this? Yeah, there should be a reason. There should be a reason. Yeah, from my analysis, from my understanding, I came up with a solution. Means I came up with an answer to this question. ये क्वेश्चन है कि जैसे कि see, as I think subtraction and addition, multiplication and division. बंगाली में हम लोग क्या सीखा था कि जोग वियोग गुण भाग. These are the primary grammar sections that everybody has to learn. Yeah. अभी देखो मैं क्यों इसको मैं इतना importance दे रहा हूँ. So the world leading companies like Facebook, Google and others, okay, everyone, if we make transactions, our financial transaction, anything for counting, we use basically jog biyog gun bhag. But what is the use of a plus b whole square, or what is counted by this formula? The answer is, maybe for scientific reasons, a lot of people are using this formula for scientific calculations, maybe in case of like chemistry, biology, okay, maybe some atomic calculations. Maybe we don't know it. But from my opinion, I think we use these type of difficult formulas to upgrade our
cerebral capacity. How? Upgrading cerebral capacity means our understanding. देखो, अब जो इंसान दुनिया में, life is full of problems, right? And everybody has to solve it. So if we can solve out those difficult tasks, those difficult formulas and calculations, then to solve out small issues in our real life problems become very easy. है ना? Like एक स्टूडेंट अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशंस का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वो इजी से आसानी से सॉल्व कर सकता है. इसका मतलब क्या है कि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होता है ना, उसका रीजन भी इट गेट्स बेटर, इट गेट्स इजियर. उसको सॉल्व करना भी ना वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि ही इज हैबिचुएटेड सॉल्विंग डिफिकल्ट टास्क एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशंस. Yes. And the problems that come in our life, it is not so much difficult because we can easily find out the reason and the person who is responsible for creating that problem, isn't it? Right. तो इसका सॉल्यूशन निकालना वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान है जिसका दिमाग is well trained by solving those difficult tasks and calculations. Right. समझ में है ना? So this is the benefit of learning that type of difficult calculations in practical life, not only to score marks in exam for cracking the government exams. Okay. Yeah. So this is the practical use. I don't know how others people that think about it, but this is what I think. तो पैसिव वॉइस तुम बोलो तो पैसिव वॉइस किस लिए यूज करते हैं हम लोग? So there's a strong reason where we have to use passive voice. If in any sentence there is no subject, we have to do in passive. Absolutely right. So main reason is that when there is no subject, Yeah. at that time we are forced to use the formula passive voice. Passive, yeah. Because tense always teach us, the tense formulas teach us to use subject at the beginning. Yeah, right. But what if there is no subject in a sentence? So Yeah. the application of the tense formulas is meaningless. Yes. That time passive voice comes to help us to clear the meaning. Yes. So इसका मतलब क्या है कि पैसिव वॉइस का यूज जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है उस वक्त, और सेकंड है अगर हम लोग बात करते हैं, बात को थोड़ा सा स्टाइलिश वे में भी हम लोग कर सकते हैं. तो स्टाइल पुट करने के लिए हमको पैसिव यूज करना पड़ता है. बस हो गया. अभी दुनिया भर में जितना वॉइस चेंज लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स सीख रहा है ना, रीजन पता होना चाहिए हम लोगों को. Yes. So these are the two clear reasons that we use passive voice when the tense formula cannot be applied. Second, to bring style to our speech and presentation. Right. That is the main reason, okay? To bring style. So now the thing is that the students are learning active and passive voice and transformation to score marks in exam. But we do not see them using those passive voice in their general conversation or in their writing skill, right? But in this video, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पैसिव वॉइस का एप्लीकेशन क्या है. ओके, बाय सम एग्जांपल्स. जैसे कि ये कैसे बोलेंगे कि हाँ अभी वीडियो में पैसिव वॉइस डिस्कशन किया जा रहा है. Now, first of all, we need to identify the tense, right? वीडियो में अभी लाइव सेशन में पैसिव वॉइस डिस्कशन किया जा रहा है. It means this is the example of continuous tense. Continuous tense. Now, my question is that if it is present continuous tense, what is the formula of it? Subject, am is are, verb one is verb one, and then ing to the end of it. Yes. But did you notice my sentence? मैंने जो सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया इसमें क्या है कि वीडियो में पैसिव वॉइस का यूज डिस्कस किया जा रहा है. Right. Do you see subject here? Who is discussing? No. इसमें सब्जेक्ट नहीं है.
इसका मतलब क्या है कि no one can say this sentence or translate this sentence according to the tense formula, isn't it? Yes, right. No one can do it. No one. So at that time, what should we do? What should we We do? have to make it in passive way, in passive Yes, we voice. have to make it in passive way. So that time, so we identified the tense, right? The tense क्या है? Present continuous का tense है. Continuous. Now Yes. second, we have to know the formula present continuous tense in passive. Present continuous tense का formula passive में क्या है ना? So हमें जानना पड़ेगा कि present continuous tense का passive क्या है. What was the example I said? मैंने example में क्या बोला था? वीडियो में वॉइस चेंज डिस्कशन किया जा रहा है. Right. Can anyone tell this sentence using the tense formula? No, It's impossible. never. It's impossible. That's why we should learn passive voice. Passive voice. Okay, so the main point is that when we cannot apply the tense formula, that moment we are forced to use the passive formula. Right. Because passive is the opposite to tense, right? जो tense में होता है, जो tense में नहीं होता है, उसको passive में लिखा या बोला जाता है. Right. Can you say it in tense? No. No. But what is the tense of this line? Present continuous. Present continuous. Now what you have to do, we have to apply the passive formula of present continuous tense. Now say this line, video में voice change डिस्कस किया जा रहा है. कौन कर रहा है वो मिसिंग है. इसका मतलब ये पैसिव है. सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये पैसिव है. पैसिव में है. तो हाउ वुड यू से वीडियो में वॉइस चेंज डिस्कस किया जा रहा है? कैसे बोलोगे? वॉइस चेंज इज बीइंग डिस्कस्ड इन द लाइव वीडियो. Absolutely right. You are 100% correct. Even an American or British would also say exactly the way you said, without any mistake. इसका मतलब क्या है कि we know the passive formula, right? We know the passive formula, but we have to use it. Now अभी difference क्या है? पहला वाला जो देखो इसमें subject नहीं था, इसीलिए हम लोगों को वो passive formula ही use करना पड़ेगा. Means we are forced to use passive formula क्योंकि एग्जाम्पल में सब्जेक्ट नहीं है. The doer, the word that does action in a sentence, that is called subject. अगर वो ही नहीं रहा, मतलब ये passive voice में ही बोलना पड़ेगा. Second example is that we are discussing passive voice now in the live video. We are discussing passive voice in the live video. इसका पैसिव वॉइस में बोलो क्या होगा? हाँ, पैसिव वॉइस इज बीइंग डिस्कस्ड बाय अस इन द लाइव वीडियो, राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट वंस अगेन. अभी देखो डिफरेंस क्या है. सेकंड एग्जांपल में क्या बोला कि इसमें वी आर डिस्कस कर दिया. हाँ, सब्जेक्ट ऑलरेडी है. अभी हमारा क्वेश्चन है कि अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव क्यों यूज करें? राइट? सो पीपल शुड आस्क, इफ द सब्जेक्ट इज देयर, द स्टूडेंट्स आर टॉट मेक फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव in exam to score marks, right? Yes. That means most of the sentences they face, they have subject. उसको तो मतलब भी समझाना पड़ेगा. अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव में क्यों लिखेंगे? पैसिव में क्यों बोलेंगे? फॉर द सेकेंड पॉइंट यू सेड, याद है ना, बोला था ना कि स्टाइल रहना चाहिए. स्टाइल के लिए. इसमें हाँ, स्टाइल के लिए. मतलब जो सेंटेंस में ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको अगर कोई पैसिव में बोले या फिर लिखे, मतलब किस लिए? टू ब्रिंग स्टाइल टू देयर स्पीच. यस.
to bring To style. show maturity in the language, English language. Absolutely right. Absolutely right. Means you are a bit more advanced than the other ordinary people who use active voice or the tense Yes, formula. yes, Clear? yeah. Yeah. So this is the practical use of learning passive voice, not only just to score marks in exam. Hmm. ठीक है? Correct. Yeah. Now these formulas will be used to make general conversation. Now this is the passive use. These formulas will be used to make general conversation, Yeah. to give, like, to be something a little bit different from the ordinary Hmm. people who don't know how to use passive voice in their conversation or writing skill. Right. Right. Style does matter, right? Yeah. Definitely. Definitely. Yes. So we should bring style to our speech to be different from others. स्टाइल तो रहना चाहिए हैं. Hmm. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिंदी में और बंगाली में, मेरा तो टूटा फूटा हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर भी ये बहुत चलेगा. इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर कोई हिंदी समझता है. अभी अभी जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, तुम जस्ट आइडेंटिफाई करना कि ये पैसिव है या फिर एक्टिव है. ये एक्टिव Okay. में होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो पैसिव में, है ना. Hmm. जैसे कि मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है. मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है. Hmm. नाउ कैन यू से दिस यूजिंग टेंस? ये पॉसिबल No. है क्या टेंस में? No. नहीं है. तो हाउ शुड वी से इट? कैसे बोलोगे? Lost. What was the line, sir? या लाइन इज लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. नो नो हिंदी में बोला था शायद. बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे किया जा रहा है. बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मुझे किया जा रहा है. बट किसने कर रहा है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? डिड आई मेंशन इट? No, no, no. मतलब इज इट एक्टिव, इज इट पैसिव और एक्टिव वॉइस? टेल मी. This is passive. Absolutely passive. Yes, absolutely passive. Now tell me the reason why do you think this is passive voice? Because there is no subject. Absolutely right. Now but still we can identify the tense of this sentence, है ना. मुझे Yes. बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा किया रहा जा है. रहा है. Say in English. Present continuous. Now you got the point. So you have to apply which formula of passive? Present Present continuous. continuous. And the formula says objects, Lots of requests lots of requests are being sent to sent. me. Absolutely right. Great. Lots of requests are being sent to me. देखो स्टाइल बदल गया ना, Yes. एकदम थोड़ा सा हटके हो गया. The uncommon way. Can you tell me, can you repeat this line with subject in active voice using the tense formula? Oh, in थोड़ा हिंदी, active. इतना हिंदी बहुत कम बोलता हूँ ना, हिंदी थोड़ा बोलना चाहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का होगा उसके लिए जो वॉइस चेंज सीखता है बट पता नहीं है कि कैसे यूज करना चाहिए. अच्छा, हाँ. है ना. हम्म. हम लोग को तो पता ही है. हम दोनों आया किस लिए? ताकि हमारे वीडियो से कोई दूसरा बेनिफिट्स पाए. Yes. And in the same way, we can also boost up the confidence level because people do not generally get on live discussion for these small things, right? But this is not small. This is not small thing at all. It will be a great help for those who are watching. है ना? Yes, absolutely. हम लोग Yeah. थोड़े हम दोनों के लिए बोल रहे हैं नहीं, हम दोनों तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? हाँ. But from our practice, the world will get the benefits. Yes. मतलब we are developing the quality to give something, है ना. और जब जिस दिन से हम लोग देने का क्वालिटी डेवलप करेंगे ना, मतलब we are developing the skills to get something back from the society or the people who depend on us for a particular thing. Yes. ठीक है. Right. हम्म. See, एकदम ठीक. you are getting confident day by day just because, see, you are habituated, you're getting habituated on live discussion. You can ask your friends, have you ever discussed anything on live Facebook live? Most of them will be terrified. Oh my god, what are you saying? Live discussion in voice change, like live discussion in English?
How can I think It's about it? I need to still upgrade my rare. knowledge. I need to build up my communication skill fast. Then only I can get on life. You are really Yeah. daredevil, daredevil. Okay, daredevil. I think Rumpa most means your friend Pinky. She is Yeah. trying to get access here, but she is facing problem. She dressed Oh. up well, to get on live. Hmm. Yes. Okay. फाइन. तो पैसिव वॉइस का यूज है ये. हम्म. Mhm. अगर ऐसा हो कि कोई सोच भी सकता है कि मैं क्यों सीखूं पैसिव वॉइस, इसका भी आंसर थोड़ा डिस्कस किया जाए, है ना. Yeah, sure. देखो, we are living in the smart digital world which is very small in terms of connectivity or technology, है ना. Yeah. Hmm. अगर कोई ये सोचे कि सर मैं क्यों वॉइस इन सीखूं, उसके लिए आंसर ये है कि दुनिया का जो नॉलेज है, दुनिया का जितना भी इंफॉर्मेशन है, जो चीज रिसर्च किया जा रहा है, साइंटिफिक इनोवेशन, मेडिकल साइंस डिस्कवरी, वो Mhm. जो रिसर्च है ना, वो इंग्लिश में ही होता है. पहला वाला डिस्कवरी, आई मीन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अभी क्या है ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड, they are more advanced in technology, but India is more advanced in spiritual cultural value.